To start with, सबसे important topic is why ethics was introduced. If you are able to understand why ethics was introduced, you would be able to answer many questions related to ethics. So basically, before UPSC started this civil services, the main focus of UPSC was to test the skills of the students and to check the aptitude and to select the students with right aptitude for civil services. As this went forward, we realized that bureaucracy is facing the problem of corruption. There is value degradation in the society among the civil servants. So there was a lot of issue, and the administration and the governance did not happen as it was wished. तो civil services के selection में ही we thought कि major problem is on the process of in the selection process, जहाँ we are exclusively focusing on skills. We are checking skills such as, are the students able to analyze things, are they able to speak in proper way, are they able to learn in a effective way. तो ये सारे skills check कर रहा था, वो एक important part है. लेकिन उससे भी important part जो भी civil services में है वो है values. If you have a person with high skills and low values, it would lead to a great disaster. अगर हम examples की बात करें तो high skills and low values, A.Q. Khan, a nuclear terrorist, nuclear scientist who helped nuclear terrorism. So he had high skills but low values. Vijay Mallya, high skills but low values, leading to lot of corruption, lot of unethical action in the society. So and this was happening with bureaucracy. तो पहले क्या प्रॉब्लम था कि हम सिर्फ स्किल्स एंड इफ वी प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स एंड वैल्यू, वी वर एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन स्किल्स एंड देयर वाज नो फोकस ऑन द वैल्यू पार्ट. तो इफेक्टिवली क्या हो रहा था, हाई स्किल्स पर फोकस करके एंड देयर वाज नो फोकस ऑन द वैल्यू सिस्टम और नो फोकस ऑन द इथिकलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. वी वर जस्ट रिक्रूटिंग इंडिविजुअल्स विद हाई स्किल्स and we were not focusing on people with high values. And because of that, what was happening is there was lot of corruption. There was lot of corruption in the administration. There was poor governance. There was less focus on the effective delivery of service. So all this led to poor governance. So UPSC thought ki the first step where we can select student with high values and high skills was the UPSC examination, where we are able to introduce a ethics paper and to select students with high values. तो उनको ऐसा लगा, and that's why they started this process of recruiting students with high skills and high values. तो what UPSC wants and various DOPT committees and बहुत सारी committees ने क्या recommend किया, that we need bureaucracy. कैसा bureaucracy चाहिए? We need bureaucracy which has high skills plus high values leading to holistic competence. तो ये this is values is where part the ethics paper come, and skills is the part जहाँ आपके बाकी पेपर्स चेक किया जाता है, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन चेक किया जाता है, एंड थ्रू ट्रेनिंग आपको स्किल्स दिया जाता है. तो इफेक्टिवली ये पार्ट आपको पता चाहिए. एंड होलिस्टिक कॉम्पिटेंस इज वन थिंग यू शुड राइट इन योर मेंस आंसर. What is one quality you want in a civil servant? He should be holistic competent. He should have both skills and values. तो ये यहाँ से सिंपल डायग्राम है, यहाँ से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होता है एथिक्स का, कि why ethics was introduced or why ethics is important. तो why ethics is important, maybe you can write that we need skills but we also need values. High skills and high values, example E. Sridharan, APJ Abdul Kalam, वेरी गुड एग्जाम्पल. तो ये एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. बट हाई स्किल्स एंड लो वैल्यूज, यू कैन राइट एग्जाम्पल ऑफ A.Q. Khan. So this is more dangerous. High skills and low values. Low values is more dangerous part than low skills and high values. तो इफेक्टिवली आपको ये दो डायग्राम टू स्टार्ट विथ. जब भी आप एथिक्स का पेपर लिख रहे हो ना, तो डायग्राम्स ड्रॉ करना मस्ट है. तो ये दो डायग्राम आपके दिमाग में याद रखिए. होलिस्टिक कॉम्पिटेंस and the diagram where skills and values both are important. तो why values or why ethics is important, वो हम as the class goes on हम उसको explain करते रहेंगे. लेकिन ये दो डायग्राम आपको उससे पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है. तो होलिस्टिक कॉम्पिटेंस की बात की जाए तो ये आपको डेफिनेटली पता चाहिए. साइमल्टेनियसली टू स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है.
जब तक आपको बेसिक इथिक्स का मतलब नहीं पता चलेगा तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हो, कोई भी पेपर लिख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इथिक्स इज द लास्ट पेपर इन GS4। तब तक आपका ब्रेन बहुत डिग्रेड, बहुत क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट हुआ रहता है। आपको वही चीज़ें याद, यू वुड एबल टू रिमेंबर ओनली दोज थिंग्स विच यू हैव अंडरस्टूड। तो इथिक्स कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इथिक्स इज व्हाट? Ethics is the study of human action. Ethics is the study of human action from the point of rightness or wrongness. Whether that action is right or wrong is the study of human actions. So, ये first definition is the study of human action from the point of rightness or wrongness. Secondly, ethics also helps us to guide our behavior. हमारा जो behavior है, it helps us to guide our behavior based on the values set by the society. So, it helps us to guide our behavior also. तो बेसिकली इथिक्स क्या है? इथिक्स क्या करता है? हमारे एक्शंस को जज करता है फ्रॉम द सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सोसाइटी ने बोला है कि ये चीज सही है या गलत है, इफ द सोसाइटी हैज डिसाइडेड, so take an example, if the society has decided that taking corruption or taking money or doing corruption is right, if the society has accepted that, or societal values, if the society has accepted that, based on that values we judge our action whether they are right or not. 18th century, 17th century, sati was considered right by the society, so it was an right action for many. But as the value system evolved of the society, now it is completely, we have agreed that sati is wrong. So basically what we are doing is we are judging our action based on the values set by the society. We are judging the action that whether the action is right or wrong. तो होपफुली आपको इथिक्स का डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा. इट्स बेसिकली, लिख के लो, इट्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट अ सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ. It's a set of standard which a society places on itself to decide whether the action is right or wrong. Whether the action is right or wrong. Basically, it is a study of human action. तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट आपको आगे जाना है कि इस कॉन्सेप्ट से हम डिसाइड करते हैं कि एक्शन, ह्यूमन एक्शन राइट है या रॉन्ग है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू गाइड आवर एक्शंस. तो ये एक इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट, इथिक्स. बट इथिक्स, एज वी सेड, इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन, it depends on societal values. Ethics depends on societal values. तो societal values बहुत important है. Based on the societal values we judge whether the action is right or wrong. अगर हम individual values पर decide करें कि whether the action is right or wrong, वो क्या बनता है? वो बनता है हमारा morals. Morality वो होता है. अगर हम इंडिविजुअल वैल्यू से डिसाइड कर रहे हैं कि कोई एक्शन सही या नहीं है, वो होता है morals. अगर हम सोसाइटल वैल्यू से डिसाइड करते हैं whether the action is right or wrong, इट बिकम्स इथिक्स. तो इथिक्स और मोरालिटी में आपको पता चाहिए, इथिक्स इज इंडिविजुअल. अगर मैं कुछ चीज खुद से मानता हूं, मैं मानता हूं कि ईटिंग नॉन वेजिटेरियन इज रॉन्ग, तो वो मोरालिटी हो गया. अगर सोसाइटी मानती है कि ईटिंग नॉन वेजिटेरियन इज रॉन्ग, दैट बिकम्स इथिक्स. तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए. अगर मेरी एक्शंस को जज कर रहा हूं, अगर मैं नॉन वेज खा रहा हूं और सोसाइटी ने डिसाइड किया कि नॉन वेज खाना सही है, तो दैट एक्शन इज एथिकल. अगर सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया या सोसाइटी में ये वैल्यू है कि नॉनवेज खाना बुरा है, तो क्या होगा? वी वुड कंसिडर दैट एक्शन एज अनएथिकल. इंडिविजुअल भी हो सकता है. वेदर सोसाइटी का वैल्यू मैटर नहीं करता, मोरालिटी में इंडिविजुअल वैल्यू मैटर करता है. मोरालिटी इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक. तो इंपॉर्टेंट है आपको इथिक्स का मेजर बेसिक डिफरेंस समझना. सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज. What do you mean by values? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज जानना बहुत जरूरी है कि what do you mean by values? Values are basically our strong belief system which guide our actions. So values को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. Values are basically fundamentals and principal conviction that guides our behavior. तो based on values, तो there are various values. तो इंपॉर्टेंट है कि values समझना इंपॉर्टेंट है. Values are core belief system or fundamental principles which guide our behavior, and based on these values we judge whether the action is right or wrong. तो effectively values आपको पता चाहिए, and values what it defines is it defines our attitude, and based on attitude we have our behavior. तो इस तरीके से relation है between values, attitude and behavior. Attitude is basically what judging a person, individual,
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस, हमारा एक प्री डिफाइंड ये होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट कि वेदर वी हैव अ लाइकिंग और डिसलाइकिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट, एंड दैट इज डिफाइंड. उसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है, उसका ओरिजिन हमारे वैल्यूज से होता है. तो what we have is values define our attitude, and attitude, based on attitude we would have our behavior, our behavior. तो एक important concept है. If we take an example, if we promote animal ethics and we have a strong belief system towards animals, and we are animal lovers, and we believe in the protection of animals, we believe in equality, we believe in non-violence towards animals, we believe in environment. So ये हमारा values हो गया. Based on this value we would have an attitude, we would have a positive attitude towards person who follows vegetarianism, who do not, or we would have a negative attitude towards animal killing, we would have a negative attitude towards non-veg restaurants, we would have a negative attitude towards person eating non-veg. तो ये क्या हो गया, हमारा एटीट्यूड हो गया, हमारा बिहेवियर उस तरीके से ही डिफाइन होगा. वी वुड नॉट गो टू अ रेस्टोरेंट जहां नॉनवेज फूड मिलता है. वी वुड नॉट विजिट अ फ्रेंड हु ईट्स नॉनवेज. वी वुड नॉट व्हाट यू से go to a place where non-vegetarian is promoted, where animal killing is happening. तो ये belief system है, ये difference है, ये sequence है between values, attitude and behavior. तो आपको basic difference आपको पता चाहिए. Values क्या होता है कि हमारे core belief system होते हैं. There's various values. तो core belief system होते हैं, and based on that values, what we have our attitude. Attitude is liking or disliking, inherent liking or disliking towards an object, towards an thought, towards an principle, and based on attitude we have our behavior. तो hopefully आपको पता चल गया होगा कि from where we started with कि why ethics is important. Then we covered कि ethics और morality में क्या है. Ethics judges one's action from the societal point of view, society based on societal values. Society ने कुछ values define किए हैं, and based on that ethics judges our action and also guides our action. मोरालिटी क्या करता है, इंडिविजुअल एक्शंस पर जज करता है. तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए बिटवीन वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर. तो इंपॉर्टेंट है जब भी हम वैल्यूज की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट आपको डायग्राम पता चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज. वैल्यूज आर स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल विच गाइड आवर एक्शन. दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कोर कन्विक्शंस. वैल्यूज कैन बी दो टाइप के, कोर वैल्यूज एंड पेरिफेरल वैल्यूज. कोर वैल्यूज कौन से होते हैं? दीज आर यूनिवर्सल इन नेचर, सच एज लव, ट्रूथ, फ्रीडम, एंड दे डू नॉट चेंज विद टाइम. ये कांस्टेंट रहते हैं. देन देयर आर पेरिफेरल वैल्यूज विच डिफर विद कल्चर, सच एज पोलाइटनेस. कोई सोसाइटी में पोलाइटनेस इज कंसिडर राइट, कहीं लग रहा है कि बहुत वीक है. देन पॉलिटिकल वैल्यूज आर, कोई सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा है, कोई कैपिटलिज्म को पढ़ रहा है, एक वैल्यू है. तो इट चेंजेस विद टाइम. तो ये इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज क्या होता है कि कुछ कोर होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, कुछ पेरिफेरल होते हैं विच चेंजेस विद टाइम. तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चाहिए कि वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं, एंड what are the different type of values. As the lecture progresses हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आए कि इथिक्स क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है. देयर इज अ लिंकेजेस बिटवीन दैट कॉन्सेप्ट. हमने इथिक्स और मोरालिटी में भी डिफरेंस देख लिया. बट हाउ डज आवर वैल्यूज इवॉल्व. तो एक इंपॉर्टेंट है कि हमारा वैल्यू फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स जिसकी वजह से हमारा वैल्यू फॉर्मेशन हो रहा है. तो आपको पता चाहिए कि जब भी हम वैल्यू फॉर्मेशन की बात करें, फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको पता चाहिए कि आपका वैल्यू कहाँ से डिफाइन हो रहा है. कि आपको वैल्यू ऑफ लव, आपको वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी, आपका वैल्यू ऑफ इम्पार्शियलिटी, वैल्यू ऑफ केयरिंग नेचर, ये कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ, और what are the reasons or what are the pillars for the development of value system. तो अगर हम ये pillars को देखेंगे तो हम बाकी syllabus को भी लिंक कर सकते हैं, तो what are the determinants of और value system development में
कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. एंड जैसे कि आप जानेंगे वी विल एबल टू लिंक इट विद अदर टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हमारा फैमिली. हमारा वैल्यू सिस्टम डिफाइन करते हैं. फैमिली में क्या, कौन सा वैल्यूज वी आर एबल टू केटर, कौन से वैल्यूज जनरेट होते हैं, केयर, रिस्पेक्ट, लव, ये सारे वैल्यूज कहाँ डेवलप हो रहे हैं, ये सारे वैल्यूज हमारे फैमिली में डेवलप होते हैं. तो दिस यू कैन लिंक इट विद द टॉपिक ऑफ रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज. तो वो भी एक टॉपिक है, तो वहां भी ये कर सकते हो. तो मेजरली वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं, फैमिली से आ रहे हैं. सेकेंड कहाँ से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है. स्कूल्स में क्या आ रहा है, रिस्पेक्ट, पंक्चुअलिटी, फीलिंग ऑफ व्हाट डू यू से, फ्रेंडलीनेस. तो ये सारे कहां से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं. तो स्कूल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां डेवलप हो रहा है. सेक्युलरिज्म मतलब क्या, यू इंटरमिन बिटवीन वेरियस व्हाट डू यू से, बिटवीन वेरियस फ्रेंड्स, आपको उनका कल्चर फील होता है. तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वी आर इनडायरेक्टली प्रोमोटिंग द वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म वेयर एवरी कास्ट क्या बोलते हैं, रिलीजन के स्टूडेंट एक साथ मिक्स हो रहे हैं एंड दे शेयर. तो ब्रदरहुड, सेक्युलरिज्म से ज्यादा ब्रदरहुड का वैल्यू. तो ये सारे कहाँ डेवलप हो रहे हैं, स्कूल्स में डेवलप हो रहे हैं. एंड मेजर रोल स्कूल्स में किसका है, टीचर का है. मेजर रोल स्कूल्स में किसका है, टीचर का है. तो आज नाउअडेज स्कूल्स इज द पॉइंट वेयर इथिकल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन एक टॉपिक है स्कूल्स में. अगर आप आज के बुक्स देखो तो यू वुड फाइंड वैल्यू एजुकेशन एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन एथिक्स. वैल्यू एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो वैल्यू एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो वैल्यू एजुकेशन में व्हाट दे आर टॉट, वैल्यू उनको वैल्यूज जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो दे आर टॉट द वैल्यूज. कौन से वैल्यूज है कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये भी सिखाया जाता है. एम्पैथी भी जनरेट किया जाता है स्कूल्स में. हाउ एम्पैथी जनरेटेड, उनका दे आर टेकन टू ओल्ड एज होम्स, ब्लाइंड होम्स, सो दे आर जनरेटिंग वैल्यूज. देन वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्लांट व्हाट यू से, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी बताया जाता है. पंक्चुअलिटी के बारे में बताया जाता है, डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है. सो ऑल दिस वैल्यूज आर taught in the school level. तो school is also one of the factors for development of values. Next important role किसका है, third important I would consider the role of law or constitution. हमारे individual में our value system is defined by the laws present, the constitution presents. The constitution कौन से values promote करता है, freedom, equality, social welfare, liberty. तो ये सारे वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं, हमारे लॉ से आ रहे हैं. रूल ऑफ लॉ, ये सारे वैल्यूज कहाँ आ रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं. तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर वैल्यू डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर वैल्यू डेवलपमेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज कहाँ से आते हैं, वन ऑफ द अदर सोर्स इज रिलीजन. अदर सोर्स इज रिलीजन. रिलीजन से हमारे वैल्यूज आ रहे हैं. यस डेफिनेटली वेरियस रिलीजन से वेरियस आ रहा है. जैसे जैनिज्म से आ रहा है ट्रूथ आ रहा है, नॉन वायलेंस आ रहा है, सेलिबेसी आ रहा है, नॉन पॉजेसिवनेस आ रहा है. तो ये कहां से, जैनिज्म से आ रहा है. सिखिज्म से क्या आ रहा है, वेरियस, अगेन नॉन वायलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द वैल्यूज. लव, केयर, रिस्पेक्ट, डोनेशन, केयरिंग नेचर, सिखिज्म से आ रहा है. डिग्निटी, ये कहां से आ रहा है, वेरियस रिलीजन. एंड ऑल द रिलीजन usually try to promote same kind of values. So religion is also an important factor for what do you say, the promotion of value system or inculcation of value system in any individual. तो हमने एक broad idea क्या देख लिया हमने, if we have started, हमने ethics का importance देख लिया. why ethics was introduced वो हमने देख लिया. Second हमने values का ये देख लिया कि what do you mean by values. हमने देख लिया कि how values, based on these values what society, अगर society ने जज कर लिया तो वो ethics हो गया. अगर individual ने जज कर लिया action based on these values तो वो क्या हो गया, morals हो गया. Individual ने, if our values is judged, our actions are judged from the point of view of individual तो वो morality हो गया. Then values leads to attitude formation. And attitude formation
Attitude leads to behavior. If you want to change any behavior in an individual, अगर हमें if you want to change our behavior, हमें क्या करना होगा? We need to change our attitude. And if we want to change our attitude, what we need to change is we need to change our value system. We need to change this value system. अगर if we want to promote equality, हमारा attitude towards behavior, हमारा behavior towards women हमारा improve करना होगा. If we want to promote equality, हमारा behavior towards women, and if we want to reduce crimes against women, what we need to do is change our attitude. तो हमारा attitude क्या है? patriarchy है. तो patriarchy change करना होगा. हमारा patriarchy attitude है. तो ये कैसे change होगा? If we change our value system. हमारा value system कैसे change होगा? If we focus on the factors जहां से values evolve हो रहे हैं. तो कौन से factors है जहां से value evolve हो रहे हैं? हमने एक factor देख लिया, हमारा family देख लिया, next हो गया schools देख लिया, हमारा constitution देख लिया या laws देख लिया, and next religion देख लिया. तो अगर हम ये चारों फैक्टर्स वैल्यू सिस्टम पर फोकस करेंगे तो इफेक्टिवली हमारा एटीट्यूड चेंज होगा ना. हमारा एटीट्यूड चेंज होगा तो हमारा बिहेवियर चेंज होगा. तो इस तरीके से हमारा वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, हमारा इथिक्स इंपॉर्टेंट है, हमारा एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, हमारा बिहेवियर इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें आपको लिंक करते आनी चाहिए. अगर हमारा पैट्रियार्कल एटीट्यूड है तो हमें कैसे चेंज करना है? अगर हमें रेप कम करने हैं, हमारे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन चेंज करना है, बिहेवियर है वो चेंज करना है, तो हमें एटीट्यूड चेंज करना होगा. पैट्रियार्कल एटीट्यूड चेंज करना है तो हमें वैल्यू सिस्टम पर काम करना होगा. वैल्यू सिस्टम पर कैसे काम करना होगा? हमारे फैमिली से स्टार्ट करना होगा. फैमिली में द रोल ऑफ द पेरेंट्स टू ट्रीट बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली, टू ट्रीट गर्ल्स एंड टू सेंड देम टू स्कूल्स एंड नॉट टू इन्वॉल्व देम इन द home related work, to give them equal focus and not to discriminate them at the school level. कि you work आपका usually girls का what kind of values we inculcate in girls is your role is in the kitchen. That is a wrong attitude. तो जब तक हमारे स्कूल हमारे फैमिली लेवल में we do not bring our change, we won't be able to change the attitude of the society. Next, school level में भी we also need to promote girl education. We need to show the teacher's role is to ensure there is equality of opportunity, there is equal treatment between boys and girls, they feel safe, and there is promotion of girl education, and there is value inculcation among the boys also to treat girls as equals, not to treat them inferior. तो effectively ये भी पार्ट हम इसमें कवर करेंगे. And then the role of laws, constitution, where they have provided equal protection for boys and girls, and we have additional laws for the protection of women. हमने बहुत सारे laws लेके आए हैं for any violence against women, protection against sexual violence at workplace, protection of violence or any sexual exploitations against children. We have a law against that. तो इफेक्टिवली हम लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हैव वैल्यू ऑफ इक्वालिटी. आर्टिकल 14 हो गया, ऑल प्रोमोट्स इक्वालिटी. सो जब तक हम ये चारों एस्पेक्ट्स पर काम नहीं करेंगे, वी वोंट बी एबल टू चेंज द एटीट्यूड. अगर एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो हमारा बिहेवियर चेंज नहीं होगा. तो वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है. इथिक्स इज बेसिकली जजिंग वंस एक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यूज सेट बाय द सोसाइटी. अगर हमारा एक्शन टुवर्ड्स वुमेन, अगर societal value is based on equality, and we consider that there should be equal opportunity for women and men, and there should not be any discrimination. If the society has set a value ki there should not be any discrimination, and if our action is against that, and if we discriminate against women, we keep women in the kitchen, we do not allow their education, that action would be unethical. लेकिन if you go 18th century, 17th century, 16th century, there the societal value was the role of women is into kitchen में ही काम है उनका, home work में भी है, there is no need for education, there was a secondary treatment, and that was a value. The patriarchal value was very evident, and that time that was ethical action. क्योंकि सोसाइटी का वैल्यू क्या था? पेट्रियार्की था. लेकिन आज क्या है? इक्वालिटी पर चला गया है. There is no difference between men and women today, but तब था. That time sati was considered as right because societal value उस तरीके से था. तो judging one's action based on societal values
And so that is ethics. It is the study of human action. It is analyzing human action whether from point of view of right or wrong. तो hopefully एक basic concept आपको ethics, values, attitude and behavior के बारे में आपको समझ आया था. And you should know few important quotes. जब भी हम quotes की बात करें, बहुत important है. आइंस्टाइन का एक इंपॉर्टेंट कोट, यू शुड राइट इट डाउन. फर्स्ट इज, उसने बोला है ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यूज. ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यूज. बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, एजुकेशन विदाउट, इंपॉर्टेंट कोट है, लिख के लो. एजुकेशन विदाउट वैल्यूज, education without values as useful as it seems, rather it makes man a more clever devil. तो जो हमने बोला कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज, जो हमने स्किल्स वाला कॉन्सेप्ट दिया, एजुकेशन इज अ स्किल. एजुकेशन विदाउट वैल्यूज मेक्स अ मैन डेविल rather than clever, it makes a man devil. तो एक इंपॉर्टेंट है. एंड why ethics is important in a society, why ethics or why acting in a ethical way is important in a society, बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्बर्ट कामस का एक इंपॉर्टेंट कोट आपको लिख के लेना है. अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट कामस, अ मैन विदाउट ethics, लिख के लीजिए. अ मैन विदाउट ethics is a wild beast loosened upon the world. A man without ethics is a wild animal loosened upon the world, loosened and beast upon the world. A man without ethics is a wild beast loosened upon this world. तो एक इंपॉर्टेंट है, अगर हम इथिक्स के बना जाएंगे, हम सोसाइटल वैल्यूज को फॉलो नहीं करेंगे, हमारे एक्शंस आर नॉट गाइडेड बाय द एथिक्स, आर नॉट गाइडेड बाय द सोसाइटल वैल्यूज, दैट इज अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ, दैट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दैट इज अगेंस्ट इंपॉर्टेंट. तो इंपॉर्टेंट कोट्स आपके आंसर राइटिंग में आने चाहिए. ये सो आज के लेक्चर थ्रू आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको पता ही चाहिए. आपको होलिस्टिक कॉम्पिटेंस का क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होलिस्टिक कॉम्पिटेंस आपके आंसर में आना चाहिए. दैट इज स्किल्स प्लस वैल्यूज. बहुत इंपॉर्टेंट है, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस आना ही चाहिए. एंड व्हाई वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, व्हाई एथिक्स इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वैल्यूज इज इक्वल टू एथिक्स. तो व्हाई एथिक्स इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी नीड बोथ स्किल्स एंड वैल्यूज. बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम स्किल्स की बात करें, रिसेंटली पीएम मोदी ऑन नेशनल सिविल सर्विसेज डे हैज लॉन्च एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स. नेशनल मिशन उन्होंने स्टार्ट किया है, कर्मयोगी मिशन स्टार्ट किया है फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारे स्किल्स इंप्रूव करने के लिए. तो एक स्किल्स इंप्रूव करना है, एक वैल्यूज इंप्रूव करेंगे. जब होलिस्टिक कॉम्पिटेंस होगा तो इफेक्टिवली गवर्नेंस अच्छा होगा. तो नेशनल मिशन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट वाज लॉन्च. तो हमने ये एक देखा, हम ये एक डायग्राम कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस, स्किल्स प्लस वैल्यूज. साइमल्टेनियसली हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, स्किल्स एंड वैल्यूज. व्हाट वी नीड इज पीपल विथ हाई स्किल्स एंड हाई वैल्यूज. ई श्रीधरन, वेरी गुड. मेट्रो उन्होंने बनाया, इफेक्टिव वर्क कल्चर इंश्योर किया, वैल्यूज के साथ किया. एपीजे अब्दुल कलाम. नेगेटिव, हाई स्किल्स एंड AQ खान का एग्जाम्पल, विजय माल्या का एग्जाम्पल. हमें क्या चाहिए, वी वांट आर सिविल सर्वेंट्स हियर. तो ये एक इंपॉर्टेंट हमने देख लिया, ये एक डायग्राम देख लिया. हमने वैल्यूज का डेफिनेशन देख लिया, हमने हाउ वैल्यूज आर फॉर्म्ड हमने देख लिया. देन वी सॉ वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर का हमने कोरिलेशन देख लिया. हमने एथिक्स एंड मोरालिटी का डिफरेंस देख लिया. What do you mean by ethics? Ethics is judging one's action based on the society's standards set by the society, and ethics also guides our action. अगर हमारे सोसाइटी ने एक चीज मान लिया कि this is right and this is wrong, and if we follow the right thing, that would be ethical action. If we follow wrong thing, it would be unethical action. तो ethics क्या करता है, हमारे actions को guide करता है. Effectively every individual will follow actions which is set by the society. तो एक important है कि इस तरीके से आपको ethics के बारे में पता चाहिए. And when we judge our action based on values, individual values, society के values अलग हो सकते हैं, individual values अलग हो सकते हैं. तो क्या हो सकता है, कभी कभी साथ में भी हो सकते हैं इथिक्स, मोरालिटी. सम ऑफ द एक्शंस सेट बाय यू एंड द सोसाइटी वुड बी सेम. तो क्या होगा, देयर वुड बी कोहेरेंस. लेकिन कुछ वैल्यूज डिफरेंस हो सकते हैं, सोसाइटी के वैल्यूज एंड आपके मोरालिटी. व्हेन यू टेक एक्शन बेस्ड ऑन योर
individual values. So that is morality. When you take decisions mostly on societal values या जो भी standard set किया society ने, that becomes ethics. Hopefully आपको basic difference तो आपको पता चल गया होगा. आपको ethics का definition I'll read it out. Ethics is basically a set of standards that a society places on itself and which helps guide our behavior, choices, and actions. It is a systemic study of human action from the point of rightness or wrongness. तो ये एक important definitions आपको पता चाहिए. And values are what? Values are core beliefs or core principles which guides our action. Human action. Important है. Beliefs, values, and हमने values का भी देखा. Core values, core and peripheral values. तो ये भी हमने डायग्राम देखा. तो जब भी हम आगे जाएंगे तो इन सारी चीज़ों का हम यूज करेंगे whenever we write or whenever we use our answer. जब भी हम इथिक्स का इंपॉर्टेंस बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है यूपीएससी में that wants you to tell you कि why ethics is important. We have already seen ethics is basically judging one's action from the point of rightness or wrongness based on societal values. So एक basic ethics का definition, it is judging humans action. It's study of human action. So basically whether a person has conducted a right action or wrong action depends on various circumstances. So basically these are known as determinants of ethics. So basically when you look at determinants of ethics, it depends on three factors. It depends on person, it depends on place, and it depends on time. So how whether action is right or wrong depends on time. So if you consider ancient time, then during that time, as we have already seen in the last section, during ancient time, sati was considered as right, patriarchy was considered as right, there was discrimination based on caste system, that was considered as right. But as the time has progressed, as the values have changed, as our knowledge about society has improved, as we have developed new concepts such as equality, fraternity, as the time has changed, our value system has changed, and thus our ethics have changed, our determinants have changed. तब कोई सती conduct करता था, that was considered right, caste system was considered right, but now present system में everything is considered wrong, sati is considered wrong, caste system. So it depends on time. So time is an important factor to decide whether the action is right or not. तो एक important factor, तो time important है. Slavery was considered right ancient time and now presently it is considered as wrong. तो एक important है कि पहले के टाइम में एंड अभी के टाइम में क्या है. पहले war was considered as it was a normal thing whenever there was conflict. Today resolution and arbitration is the new normal. So time is an important factor. Next is place is also a factor to decide the ethicality of the action. Place is also an important factor. So as you change the place, the laws change. And as we have considered, law is also one important factor to decide whether the action is ethical or not. As we change the place, if you go to Middle East, the value system is different. The laws are different. The punishment is different. The values promoted by that country is different. As you go to different societies, the laws are different. So if you consider within India, tribal society, important है tribal society, अगर tribal society की बात की जाए, वहाँ polygamy is considered right, but other places में it's considered as wrong. So ethics, whether polygamy is right or wrong, depends on place, it depends on culture. तो effectively ये important factor है. साइमल्टेनियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज चेंज हो जाते हैं, लॉज एंड वैल्यूज चेंज होता है एज वी मूव प्लेसेस. तो इफेक्टिवली हमारा इथिकल एक्शन राइट है रॉन्ग है वहाँ. एंड लास्ट इज पर्सन. तो वहाँ भी यू वुड सी द वैल्यू चेंज एज वी एज द डिसीजन इज कंसिडर राइट और रॉन्ग बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द पर्सन. सो हमने एक देखा कि एक तो है टाइम, एक तो है प्लेस, एंड थर्ड इज पर्सन. इंपॉर्टेंट है पर्सन में इफ यू सी रिलीजन वाइज, एवरी पर्सन का रिलीजन अलग होता है. तो बेस्ड ऑन द रिलीजन ही फॉलोज, वी कंसिडर, द पर्सन कंसिडर्स और द सोसाइटी कंसिडर्स दैट एक्शन इथिकल और अनएथिकल. इफ यू सी
Christianity, they consider abortion as wrong. But तो ऐसे तो वो person के हिसाब से abortion would be wrong. If the religion if he follows Christianity, he would consider abortion as wrong. But as a doctor, if I want to save someone's life, that I would consider as right. तो person पर depend है, basically person पर depend है, मतलब religion पर depend है. Second, उसके knowledge पर भी depend है कि how much knowledgeable he is. तो बेस्ड ऑन नॉलेज ऑल्सो भी इथिक्स इज डिटरमाइन. अगर उसको पता ही नहीं है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो वी दैट ऑल्सो डिटरमाइंस द इथिक्स ऑफ द सोसाइटी. तो नॉलेज ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. देन पीयर प्रेशर, फैमिली इन्फ्लुएंसेस, familial values also determine the values and effectively the ethics of the person. So effectively, when we see that when we see the rightness and wrongness of any action, it depends on various factors. It depends on the person also, it depends on the place also, it depends on the time also. So these are the important determinants of ethics. These are the important determinants of ethics. So ethics depends on whether we consider that action right or wrong, depends on all these factors. The first factor, if you see, the first factor is time. Ancient period में slavery caste system was considered. Next is place, culturally, organizationally. If you see organization wise, spying is considered right for raw and IV organization, but it is wrong for any other private organization. So it depends on place. Profession wise ethics change. Profession wise ethics change. Profession wise ethics change. ठीक है. A hangman, for him killing someone is right, but for others it is wrong. So place, again, profession, again it changes. And constitutional philosophies also it change according to the values promoted by that constitution. तो ठीक है. So whether the action is considered right or wrong, it depends on the constitution and laws, as we have seen. And third is person. It depends on the religion of the person. It depends on the religion of the person whether he considered that action right or not based on the values promoted by that religion. Societal values पर depend करता है, knowledge system पर depend करता है. तो ये सारे factors है. You have to draw this diagram and effectively you have to show that ethics is dependent on various factors such as time, place and person. So whether the action is right, it depends on all these factors. You have to write whenever you are writing about determinants of ethics. तो एक important factor है जब भी आप लिखो. And as we have seen कि हमारे values जैसे है, हमारे जैसे values define होते हैं, we have seen the 4 factors which define our values. Those are also determinants for ethics. Religion is also an important factor is an important determinants of ethics in the society. तो ये सारे factors लिखना बहुत ज़रूरी है. Next, whenever we are seeing about consequences of ethics is basically why one should follow ethics. What would happen if one follows ethics, or what wouldn't happen if one does not follow ethics, या क्या होगा अगर ethics follow किया है, या क्या होगा जब ethics follow किया नहीं है. तो ये आपको पता चाहिए कि what is the consequences, why we need to follow the right action, why ethical action is the right action which is subscribed by the society. जो society ने बोला है हाँ ये right action है. Why do we need to follow ethical action? Why do we need to follow the right action? What would happen if we do not follow? Ethical action is important. What is the consequences of ethical action on individual? If the individual follow ethical action, what would happen? There would be inner peace. He do not have to worry about his actions. अगर आपने कुछ गलत काम किया, there would be always a inner feeling of what do you say, घबराहट हो कि you would always be conscious and you will always fear for your action. So when you follow ethical action, there would be inner peace. आपने corruption किया है, which is a wrong action, unethical action, there will always a fear and that would unsettle you. There would be cognitive dissonance. आपको हमेशा लगेगा, there would be fear. There would not be inner peace. There would not be satisfaction. So if you follow ethical action, there would be inner peace, there would be satisfaction of your action. You would be happy because you would not have any fear. You would not have any fear about
the society, about any actions. Next is there will be proper integration with the society because you are following the ethics set by the society. अगर आपने ethics को follow किया है, so you would be an integral part of the society and there would not be any conflicts. So there would be integration with the society. इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी. तो ये होगा एंड तो ये इंडिविजुअल लेवल पर फायदे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर फायदे हैं. दैट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉलोइंग इथिक्स. दैट इज व्हाई यू नीड टू फॉलो इथिकल एक्शन. तो आपको क्वेश्चन आएगा तो यू नीड टू से देयर वुड बी इनर पीस, देयर वुड बी सेटिस्फैक्शन, द पर्सन वुड बी हैप्पी एंड देयर वुड बी प्रॉपर इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी, प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी. ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पर. सोसाइटल लेवल पर व्हाई डू वी नीड टू फॉलो एथिक्स, व्हाई डू वी नीड टू फॉलो एथिक्स सोसाइटल लेवल पर. फर्स्ट, सोसाइटी लेवल पर देयर वुड बी सोशल हार्मनी. इफ एवरी इंडिविजुअल फॉलोज एथिकल एक्शन देयर वुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स. Everyone would act in a very proper way. So there would be social harmony. There would not be any social conflict. Social conflict नहीं होगा, social harmony होगा. There would be growth and welfare of all. There would be growth and welfare of all the section of the society. बहुत important है. तो and there would be less crimes. There would not be any crimes. तो ये सारे फैक्टर्स जब whenever an individual follow ethical action, effectively individual action would reflected in the society. Every individual follows ethical action, there would be peace, harmony, there would be social bond, there would be very good social bond. तो effectively ethical action का फायदा यही है कि whenever you follow ethical action, there is a benefit to the individual also and society also. Third is whenever you take ethical action, what would be the impact on administration? If an administration पर क्या impact होगा? Positive impact. Whenever a bureaucrat functions with integrity, honesty, impartiality, with discipline, with leadership qualities, with honesty, what would be the impact? There would be quality of service delivery. यहाँ भी लिंक्स होते हैं, ये भी एक syllabus में टॉपिक है. So what is the consequence of ethical action of bureaucracy? Or whenever the bureaucrat is ethical, what would happen is quality of service delivery होगा. Then public trust बढ़ेगा about institutions. Democracy पर public trust बढ़ेगा. Definitely democracy पर public trust बढ़ेगा. Next, there would be welfare, social welfare, which is a constitutional value. Definitely उस पर affect होगा. तो एक important है कि अगर whenever there is ethics in the society, ethics in bureaucracy, that would eventually lead to an ethical governance. Whenever the administration or bureaucracy is ethical, it would lead to good governance and effectively it would lead to ethical governance. And whenever there is ethical governance, there will be development and welfare. तो ये diagram आपको draw करना है. Why ethics is important? Why ethics? From environmental perspective, if we follow ethics in environmental perspective, it is a part of applied ethics. Whenever there is an interaction between humans and environment, are we following the principle of environmental ethics? Are we using our environment in a very proper way? Are we not over exploiting it? If we follow environmental ethics, there will be lesser pollution. We are able to tackle the issue of climate change. जब भी environmental ethics आएगा, आपको अफरोज शाह का एग्जाम्पल देना है. He individually cleared the Warsaw Beach, all the plastic pollution, and thus help in promoting cleaner environment. तो अब जब environment पर impact क्या होगा? If we follow ethical action, there would be less pollution, there would be less climate change. We are able to tackle the issue of air pollution also. Afforestation बढ़ेगा. There would not be any illegal killing of animals. We would be able to protect our diversity. If we respect our environment, effectively what would happen is we would have a cleaner environment. So ethical action on the environmental front would lead to lesser pollution, lesser climate change, greater biodiversity and welfare. Effectively it would help our human being also. तो एक important ये perspective आपको पता चले. International level पर if we follow ethical actions, international level पर we would not have wars. There would be peace in the
ये तो इफेक्टिवली देयर वुड बी लेस कॉन्फ्लिक्ट, लेस वॉर्स, लेस problems in the world, and more the world would move towards peace. The world would move towards peace. So international level पर what is important is we work together as one family. We follow the principle of Vasudev Kutumbakam, that the world is one family, and we work towards striving to achieve the goals of sustainable development. So effectively, if we follow ethics in international relationship, there would not be any wars, there would be peace, there would be sustainable development, and there would be happiness among all the section of the society. So why ethics is important is at the individual level, it would lead to peace, satisfaction, there would not be any conflict, there would be integration with the society. At the society level, there would be lesser conflict, lesser crimes, at the international level, at the administrative level, and at the environmental level. तो ये सारे आपको consequences of ethics बताने हैं कि अगर ethics follow करेंगे तो ये positive होगा, अगर ethics नहीं follow करेंगे तो ये negative impact होगा. तो यही consequences है, and यही आपको लिखना है. Why ethics is important? Why would you take an ethical action? To support an argument कि ethical action क्यों लूँगा, कि administration पर positive impact होगा, nation पर positive impact होगा, and society पर positive impact होगा, और individual level पर भी positive impact होगा. ये सारी चीजें आपको बतानी है whenever you are looking about consequences of ethics. Simultaneously determinants of ethics जब बता रहे हो तो कि अब हमारा rightful action, ये action right है या wrong है, it depends on various fronts, various aspects पर depend. It depends on time, it depends on the place. Polygamy is considered wrong in the society, urban area where we live, but tribal society में it's considered as right. Middle East में it's considered as right. So it depends on place. As we change the place, the laws change, constitution changes, and the values promoted are changed. तो उस हिसाब से changes होता है, changes हो जाते हैं. तालिबान का अलग laws rules है, उस society के लिए they consider that thing is right, but अलग constitution में, अलग laws में that considers, and person, because as a person you follow your values, and these values are determined by religion, your family, your society you live. Based on these values you determine whether the action is wrong, right or wrong. Hopefully आपको थोड़ा सा determinants of ethics समझ में आया होगा. Consequences of ethics बहुत important है. तो ये as you see our notes you would find this topics आपके नोट्स में मिलेंगे, एंड दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. तो जब भी आप यहाँ का इसका एग्जाम्पल दे तो आपको सती का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है लिखना. आपको पॉलीगैमी का एग्जाम्पल जब भी है डिटरमिनेंट्स एंड इसका इंपॉर्टेंट है. अबॉर्शन का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि इट्स कंसिडर्ड रॉन्ग इन क्रिश्चियनिटी बट it's legal in India, it's considered ethical in India. If you have certain if you follow certain guidelines, it's considered legal, effectively considered as right. तो ये आपको एग्जाम्पल थ्रू बताना पड़ेगा कि एंड इथिक्स, why ethics is important, why ethics is important is equal to what are the consequences of ethics. Why ethics is important at the individual level, societal level, national level, international level, environmental level, administrative level. तो why ethics is important and consequences of ethics same है, एंड उस तरीके से आपको लिखना है एंड आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है कि एट द इंटरनेशनल लेवल व्हाट प्रिंसिपल वी नीड टू फॉलो एट द इंटरनेशनल लेवल. जब भी हम इंटरनेशनल एथिक्स की बात करें, वी नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील. पंचशील इज नॉट इंटरफियरिंग इन द others country. We need to follow the principle of sustainable development. We need to follow the principle of peace. We need to follow the principle of Vasudev Kutumbakam. We need to follow the principle of inclusive growth. तो ये सारे प्रिंसिपल पर हमने हमारे एक्शंस होने चाहिए so that there is peace in the international. तो ये values international ethics में follow होने चाहिए. तो hopefully you are getting this lectures. And if you read the notes along with it, you would be able to write a better answer. So determinants of ethics is based on time, place and person, and consequences. We need to write why ethics is important at the individual level, societal level, at the national level, international level, administrative level and environmental level. तो ये important है. तो hopefully आपको ये सारे topics का understanding, basic understanding आ गया होगा. And
तो होपफुली यू आर एबल टू राइट अ बेटर आंसर वेन एवर, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स पर कम आएंगे लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इथिक्स पर ज़्यादा आएंगे. डिटर्मिनेंट्स आपको सिर्फ पता चाहिए कि क्या डिटर्मिनेंट्स है टू कंसिडर वेदर एक्शन इज राइट और नॉट. द डायमेंशंस ऑफ इथिक्स, basically the concept of dimension of ethics is basically the study of subject of ethics. Usually there won't be any direct questions but there would be application of this dimension of ethics. तो थोड़ा सा बेसिक्स पता चाहिए. इसमें से 2 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आई विल स्टार्ट इट इन, विल कवर दिस टॉपिक इन ब्रीफ. To start with, the first and the most important part of this dimension of ethics or the study of ethics or the subject of ethics, उसके क्या क्या सब डिविजन है. फर्स्ट सब डिविजन इज मेटा एथिक्स. तो मेटा एथिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है. देन देर इज अ सब्जेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स, देन देर इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, एंड फोर्थ इज अप्लाइड एथिक्स. तो ये 4 डायमेंशंस है या 4 सब सब्जेक्ट्स है ऑफ इथिक्स जो सिलेबस है हमारा. तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है अप्लाइड एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मेटा एथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हम विल ट्राई टू कवर एंड आई विल टेल यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट एवरीथिंग. टू स्टार्ट विथ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मेटा एथिक्स. Basically, meta ethics, what it does, it looks into the origin of the concept of ethics. It looks into the origin of concept of morals. तो ये ethics subject कहाँ से हमारा origin हुआ, तो it looks into that. Second, it looks into the concept of what is good and bad. तो first, it looks into the concept of origin of ethics, and then looks into the concept of कि what is good and what is bad. What is the definition of good, what is the definition of ethics, what is the definition of morality, so it goes into the basics of ethics. So it goes into the basics of ethics. तो ये एक important है. It looks into things that whether moral values or ethical values, are they universal, are they eternal truth. तो ये एक डेप्थ में जाता है and it is above the study of actual ethics. It is above the study of actual ethics. ये एक बेसिक्स पे जाता है कि ये it looks into the concept कि हाँ what is right, इस चीज़ को right बोलना है, इस चीज़ को wrong बोलना है, क्या definitions है, whether the concept of ethical values or moral values, are they universal, are they eternal truth. तो ये सब कुछ बेसिक्स में जाता है. राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस ये इंश्योर करता है कि इसका डेफिनेशन खोजने की कोशिश करता है. डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्म्स ऑफ एथिक्स एंड हाउ वी नो समथिंग इज राइट और रॉन्ग. तो ये कॉन्सेप्ट में जाता है कि ये सही है या गलत है, या हाउ डू वी नो दैट. तो ये स्टडी ऑफ मेटा एथिक्स, इट इज अबव द स्टडी ऑफ एक्चुअल एथिक्स एंड इट लुक्स इनटू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. इट आल्सो लुक्स इनटू द ओरिजिन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स, वेदर मोरल वैल्यूज आर इटर्नल ट्रूथ और सिंपली अ ह्यूमन कन्विक्शन. ये कॉन्सेप्ट को मतलब स्टडी करता है. साइमल्टेनियसली इट स्टडीज इनटू what does the word good bad means, एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है, तो उस कॉन्सेप्ट पर फोकस करने की कोशिश करता है. तो ये एक बेसिक टर्म्स है विथ रिस्पेक्ट टू मेटा एथिक्स. नॉर्मेटिव एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है. नॉर्मेटिव एथिक्स बताता है कि हाउ एन इंडिविजुअल, अ पर्सन शुड एक्ट इन अ एथिकल वे. तो इट डिफाइंस क्राइटेरियाज टू बिहेव इन एथिकल वे. तो ये बताता है कि एज एन इंडिविजुअल हाउ वन शुड एक्ट, what is the model or what is the ideal way to act in an ethical way. So it defines criteria to how one should act in a ethical ways, and it formulate moral rules also. ये बनाता है, rules बनाता है कि how one should act in a way so that it becomes a morality or the action becomes ethical action. तो ये बताता है, it sets standards and it tells how an human individual should act. तो ये बताता है normative ethics. Normative ethics में there are 3 sub branches which are most important. First is the teleology concept. Next is deontology, and third is virtue ethics. Teleology में focus is on how one should act is the end should be good. तो teleology में what is important is end is important. आपके actions जो ले रहे हो आप, the end is important in that. So teleology is a type of branch of normative ethics which focus on consequences. It focuses on the end. Your action should be end. If you want to become rich, you can become rich by any way. You can become rich by
working hard, or you can become rich by stealing also. But what is the ultimate aim? The ultimate aim is you becoming rich. So it focuses on the concept of being rich. For them, the action is ethical if you are able to achieve the goal. So if the common concept of a boy, his mother is not well, and he has to buy medicine. So if he steals medicine and and he does not have money, so if he steal medicine and give it to his mother, that action is right according to teleology, because here what we are checking is the ultimate truth or the end. The end is that the life of the mother is saved. तो इस फिलोसॉफी के इम्पोर्टेंस, इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द एंड. इसमें इसका सब पार्ट है यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म सेज एक्शंस which are beneficial for maximum people, those actions should be taken. And इसका जो यूटिलिटेरियनिज्म का है कि maximum benefit of maximum number of people, and this concept was given by Jeremy Bentham and J.S. Mill. तो उन्होंने promote किया था, and it focuses that there should be maximum benefit of maximum number of people, focusing on the end aspect कि यार सबसे important है happiness of maximum people. तो वो actions लेने चाहिए which gives happiness of maximum people. तो ये सबसे important है. जैसे if you take a case of इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है टेलियोलॉजी. डियोंटोलॉजी ऑन द अदर एस्पेक्ट फोकसेस ऑन मीन्स. इट सेज योर मीन्स शुड बी इथिकल. टू कंसिडर एनी एक्शन टू बी इथिकल, द मीन्स आर इंपॉर्टेंट. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कांट की थ्योरी इंपॉर्टेंट है. इमैनुअल कांट एक फिलोसोफर थे. ही गेव अ थ्योरी ऑफ deontology, and he said your action should become a universal law. Then only your action is ethical. You should act in such a way that your action becomes a universal law. It gives focus on means of the action. According to him, stealing is wrong irrespective आपका end क्या है. Irrespective आपका end क्या है, your action should be ethical if your means are ethical. तो according to him, according to categorical imperative of Kant, your action should become universal law, and you should not use someone as means to achieve your end. The end should be end in itself. You should not use someone as end. Surrogacy में क्या है? You are using someone as a mean to achieve your object. तो for him, the means is wrong. आप क्या कर रहे हो? आप किसी थर्ड पर्सन को यूज कर रहे हो फॉर अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव. According to Kant, this concept is wrong. So deontology focuses on means. If you follow good action, if you follow an ethical means to achieve your end, irrespective end क्या हो रहा है, even if the end is right or wrong, आपका means important है according to deontology. जब भी केस स्टडी की बात कर रहे हैं, तो if you support any action, if you want to support any action, there is a crowd, and there is a crowd which is coming to kill you, and you have a firearm in your hand. So what should be? So if you fire with the gun, that action would be considered as wrong according to deontology, because non-violence is one value which is supported by everyone. So the means is wrong to stop the crowd. There could be other means, but teleology said that the ultimate aim is to calm down the crowd. So if you even use a firearm, that is right. तो जब भी आप केस स्टडी में ऑप्शन दे रहे हो, यू कैन यूज द थियरी सच एज टेलियोलॉजी, डियोंटोलॉजी टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट. तो टेलियोलॉजी लुक्स एट द एंड. इट सेज हैप्पीनेस. यूटिलिटेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ टेलियोलॉजी व्हिच फोकसेस ऑन द एंड पार्ट, दैट इज मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. इट डायरेक्टली लुक्स इनटू द बेनिफिट पार्ट, द एंड पार्ट, whereas deontology focuses on the means part, and it says that the means are important. Similarly, the concept of deontology is also focused in the Hindu mythology, in our Gita, that is Nishkama Karma. It says focus only on your work, only on your hard work. Do not focus on the goals. You would definitely get the goals. So Nishkama Karma indirectly focuses on means, and it says that you should do your duty. Deontology also focuses on your duty. Your ethical action should become your duty. It should become a universal law. So Nishkama Karma also focuses on, and Gandhiji's philosophy also focuses on means. It also says that means are as important as end. You cannot. So Gandhiji could have achieved the goal of independence through use of violence, but for him means were as much important. And so after Chauri Chaura incident, he stopped, and he stopped the movement immediately. For him, the means were as much important. So ये examples आप देख सकते हो. And virtue ethics is third branch of ethics, which says that
if a person having certain virtues, if he takes certain actions, those actions would be ethical action. तो ये जो virtue ethics का concept है, ये Plato, Aristotle and Socrates उन्होंने लाया है. And according to them, if a person have certain virtues, if a person has certain virtues and if he takes any action, those actions would be considered as ethical action. So virtue ethics is an important branch. Virtues are basically moral good characteristics in an individual. These are morally good qualities in an individual. If such morally good qualities are present in an individual and that individual takes certain good actions, those actions would be considered as ethical action, and we need to follow such actions. So Pluto ने 4 fundamental virtues दिए. First, according to him, wisdom is one of the important virtue. If any person has wisdom, he would be able to take ethical action. Next, temperance. Temperance is one important virtue. Fortitude is one important virtue, and last is justice. ये 4 virtues उन्होंने. Justice is being fair. If a person is being fair, he would be ethical. Fortitude is showing courage during adverse time. So you should have a quality of courage. You should have a quality of fortitude, and that's one of the most important value or virtue an individual should have. Because if you do not have courage, if you do not have fortitude, would you be able to speak truth? Would you be able to take any ethical actions? You won't be able. So fortitude is also one of the most important actions. We'll take fortitude when we are taking civil services values, but fortitude is one important value. Next is temperance. Temperance is avoiding extreme. So temperance is showing resistance to any thing which comes into your mind. So if anyone gives you corruption and if anyone gives you money to take certain unethical action, you show courage to say no. You show courage to say that this action is wrong, and you are able to resist that action. You are able to self-control that action. So this is one of the important virtues that a civil servant should have. And wisdom. Application of knowledge is called as wisdom. So every individual should have wisdom. Until you know that this action is right and wrong, until you have knowledge of right and wrong, can you take ethical action? You cannot take any ethical action. So to be able to conduct any ethical action, you should have these 4 ethical virtues, and you can write these 4 values even in civil services. Which value is important to according to you? You can say fortitude is important to me, temperance is important to me, justice is important to me, and wisdom is important to me. So जब भी आप मेंस में कोई आंसर आए तो you can use this. Which value is important to you? You can say fortitude is important, because without fortitude, without courage, and situations are becoming so extreme, every action a civil servant has to be courageous to take certain actions. He has to be courageous and he should not fear anyone before taking action. तो courage is an important. तो ये virtue ethics हो गया. तो 3 टाइप के हमने normative ethics देखे. How one should act, how one should behave. ये normative ethics में हम देखा जाता है. It sets moral principles. First moral principle is teleology, that हमें ऐसा act करना है कि our end becomes very good. But the problem with end is the means become wrong. Deontology focuses on means. Kant principle of categorical imperative, that the action should become end in itself and you should not use someone as means. And third is virtue ethics. तो ये 3 पार्ट किसके हैं? 3 पार्ट हमारे इसके हैं, नॉर्मेटिव इथिक्स के है. नेक्स्ट उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव इथिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव इथिक्स? तो डिस्क्रिप्टिव इथिक्स के बारे में भी आपको पता चाहिए. डिस्क्रिप्टिव इथिक्स बेसिकली व्हाट इट डज इज it sees how people react. It does not say as ki how one should act. It analyzes humans behavior, it analyzes humans ethical action and what are humans idea about ethical action. तो ये क्या करता है? just compare करता है कि what is my idea of ethics, what is your idea of ethics, how every individual is acting, and it compares ethical action between different section of society. कि according to Jainism, eating non-veg is right. According to Muslims, they eat non-veg. According to them, it is not right. So it tries to compare different ethical beliefs and ethical values of different societies and try to bring out how every society reacts and what are the common universal principles. So ये क्या करता है? ये compare करता है. It tries to understand how presently a individual sees what is his reaction with respect to any ethical action. What is his idea? What he considers as right or wrong? What society के values क्या है? ये उसको study करता है. तो descriptive ethics majorly focuses on studying people's belief about morality. तो एक important है. इसमें ही एक कॉन्सेप्ट आता है इथिकल यूनिवर्सलिज्म एंड इथिकल रिलेटिविज्म.
So according to ethical universalism, ethics is common and ethics is universal across the countries, across states, across people, across race. ethics एक common term है. Certain actions are good and certain actions are bad. तो ये एक concept है जो ethical universalism believes certain मतलब it believes ethics is universal. So but we cannot set such principles. Could be मतलब to give an example कि drinking alcohol is wrong in our society, but if you go to tribal society it is right. So ethical universalism says कि नहीं, if we set a principle कि नहीं, drinking alcohol is wrong, you would curb the others right to drink alcohol. उनकी अगर society में drinking alcohol is right तो वो drink कर सकते हैं, तो you are killing that idea also. So whenever you are trying to set a ethical universalism, there would be conflict, because we are a diverse society. India is a diverse society. If you see the concept of मतलब इतने सारे religion हैं, अगर मतलब डिफरेंट फूड हैबिट्स है, डिफरेंट ड्रेसिंग हैबिट्स है, इफ वी से कि नहीं यही सही है, ईटिंग वेजिटेरियन इज ओनली राइट और ईटिंग नॉन वेजिटेरियन इज राइट, इट वुड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट वुड सेट ओनली वन प्रिंसिपल एज राइट, एंड that is not the right way to go through. So ethical universalism is, it says that there should be universal principles of ethics, and it tries to bring out such certain values that नहीं एक individual में ऐसे ही behave करना चाहिए, everyone individual should behave in certain way. But there is other concept of ethical relativism. It says कि नहीं the values, as we have seen, the determinants of ethics changes with time, it changes with place and it changes with person. Ethical relativism says कि नहीं we have to respect the rights and respect the values of other society also. We have to respect the rights and the beliefs of other society also. Tribal society को हम integrate नहीं कर सकते पूरी तरह. We have to respect them. The Jawaharlal Nehru's tribal Panchashil was towards ethical relativism. He said we cannot totally kill their culture and bring them to our culture and say कि whatever they were doing is wrong and whatever we are doing is right. We have to integrate both the culture, we have to respect both the culture. Polygamy बहुत जगह allowed नहीं है, बहुत जगह allowed है. तो there is ethical relativism, and values change with time, values change with person, and values change with place. So what we need to promote is ethical relativism, where the values which change with time, and we have to respect the beliefs, attitude, and the actions of other society also, because they have evolved in a different way. Their time period is different, the societal values are different, तो उस हिसाब से change होता है. तो we have to respect every society. तो what in ethical universalism and ethical relativism is a part of descriptive ethics, where we are studying individual ethics and we are trying to compare both the ethics. And the last concept is applied ethics. ये आपको पता चाहिए, where the theories of ethics are applied in the field of environment. The theories of ethics are applied in the medical field, in the ethics field, in the sports field, in the governance in the corporate field. So basically applied ethics, what it does is it ensures the application of the principles of ethics in the various fields. Environmental ethics, it looks into the application of ethics in the field of media, in the medical field, how a doctor should act in an ethical way. तो हिपोक्रेटिक ओथ है. स्पोर्ट्स एथिक्स में देयर इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्पोर्ट्समैन. तो क्या होगा मेडिकल फील्ड में, व्हाट इज the application of ethics in the medical field is the doctors have to follow Hippocratic oath. For the Hippocratic oath, आपको पता चाहिए, he should not disclose the information of the patient. He should give the best treatment available. He should not harm someone. ये सारे ethical principle है in the medical field. Media में भी, if you see in the media field, media may be one has to follow certain ethical principles. You would find two important documents in our document section with respect to media ethics and medical ethics. Go through it. We have given in depth with respect to how ethics is applied in the medical field and what are the ethics issues in the media and medical field. So media field में क्या है? One has to be fair, one has to be non-judgmental, one has to provide the right facts.
one has to ensure that the privacy of the individual is ensured, one has to be transparent, one has to be unbiased. तो ये सारे values ensure करने हमने media field में. तो ethics, applied ethics looks into the application of ethics in the various field and try to bring out a professional code of conduct for every field. तो ये है media ethics, applied ethics. So we have seen 4 important branches. First branch is the meta-ethics, which looks into the origin and the basic concept, what is the definition of goodness, what is actual goodness, what is wrong action, what is good action, good किसको बोले, wrong किसको बोले, origin of ethics इस पर देखता है. Normative ethics, how one should act, it sets moral rules. तो moral rules में हमने 3 type of philosophies देखे, deontology, teleology and virtue ethics. Then we saw descriptive ethics. Descriptive ethics बताता है कि how actually individual functions, अभी कैसे act कर रहा है, what is their belief about morality, वो check करता है. इसमें हमने ethical universalism and ethical relativism देखा. And fourth and most important हमने applied देखा, which applies the application, which what it does, it जो भी rules हमने develop किए हैं normative ethics में, it looks into the application of those rules and regulations, rules and principles in the field of various fields such as medical ethics, media ethics, sports ethics, in the field of corporate. तो ये सारे इसमें वो apply करके it tries to ensure that that field becomes ethical and there is no unethical action in that respective field. Hopefully you are able to get, you can find the document and you can correlate the terms, and you can, any doubt you can always call us. Thank you.